Dubai Mall. Hello and welcome everyone to my YouTube channel. I'm Yashika Sharma and today we are gonna explore Dubai. Getting a metro card in Dubai is as easy as in India. الأبواب تغلق. Doors closing. برج خليفة. دبي مول. Dubai Mall is the largest mall in the world and यहाँ पर every year million of visitors come, so it is a must. If you are coming to Dubai, you should definitely without any doubt go to Dubai Mall because there are a bunch of things to do in Dubai Mall like aquarium, skiing and so many things that you're gonna see. Right outside the Dubai Mall, we had this small mall जहाँ पर खाने के लिए there were so many restaurants, posh restaurants, and the Dubai famous Burj Khalifa. This is really a masterpiece. Each and every block is so much blinging. My eyes were so happy to see this. मॉडल वॉक करो ये बिल्कुल यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा प्रिंगी है। You can imagine how big this mall is क्योंकि this restaurant is covered with big LED lights and right under it we have the ice skiing area. हाँ जी You have KFC, McDonald's, Subway, and each and everything that you wanna eat, you can get it easily right here in Dubai Mall. As the mall is so big, आप गुम ना हो जाएं इसलिए they have these screens here. This is Dubai Dino. ये है 155 million years old dinosaur. Dubai Metro and Dubai Mall is interconnected, so you have to walk a lot and a lot. जब भी आप आएं, please wear the comfortable shoes. And tomorrow is gonna be a big day for us. As this day ends, we are gonna sleep and tomorrow go to a different destination. Keep watching.
and my friends are back again to explore the Dubai's beautiful mall. This is Dera City Center. It is good for shopping like Zara, H&M and other brands like perfume and all. But we were here to eat some burgers and to go to our famous day to day. We have planned our evening for something special, desert safari. It's okay. Hello and welcome back. Hi Priya. Hi. Today we are going to do desert safari और अभी हमने cab लिया है. You can see the condition of the cab. It's so good. And we'll catch you back. Please keep watching. और अभी ये कार सिर्फ हमारी है. थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ और दो लोग आएंगे. फिर हम उनके साथ chat करेंगे. To do the desert safari, you have to travel a lot from Dubai to Sharjah and Abu Dhabi nearby. It only takes like 2 hours or maybe sometimes 3 to reach there. हाय हबीबी प्रिया और मैंने स्कार्फ पहन लिया है और अब हम रेडी हैं यहाँ से 5 मिनट बाद एक नेक्स्ट स्टॉप के लिए. इट्स वेरी हॉट है. ओके बाय. राजस्थान में भी इतनी गर्मी होती है. This was our second stop where we could do the ATV rides for about 120 AED to 150 AED, and also there was sitting area outside and inside where there was AC, some juice corner, camel ride, pictures with the eagle, even the sandboard. उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हमारी गाड़ी की हवा थोड़ी कम करी गई because now we were gonna enter to the desert. This is where the cab dropped us and the same cab is gonna take us back to our hotel. I watched a beautiful sunset for the first time. इतना सुंदर sunset desert में मैंने कभी भी देखा नहीं. It was my first time in the desert only. So it was a full package for some 80 AD. If you guys want some help about it, you can comment down. I'll share the number of the same guy अगर आपको ये अच्छा लगे तो. There were many other options as well, but this is what we booked for. To click pictures with this bird of them phantom, it was around 10 AD and इनकी आइज़ को ढक के रखा जाता है ताकि इनकी आइज़ में सैंड ना जाए या फिर ये खुले आसमान को देख के उड़ने की कोशिश ना करें. ये मुझे बहुत प्यार से इन्होंने मुझे फेदर दिए बर्ड का बिकॉज मुझे बर्ड्स पसंद हैं. तो देखो इधर.
आ गए हैं जहाँ पे सारा प्रोग्राम होगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज है और ये है शीशा कॉर्नर, अगर आपको यहाँ पे बैठ के शीशा पीना है तो। एंड वी हैव सम ड्रेस शॉप्स, मैं आपको दिखाऊंगी, एंड सम इन आंटी ने मुझे ये मेहंदी लगा के दी है। इससे कहीं प्यारा और क्यूट फ्लावर मैं खुद बना सकती थी, पर पता नहीं मैंने क्यों ही लगवा दिया ये। अब मैं इसको जाके वॉश कराऊंगी क्योंकि हाय प्रिया। Some snacks, food, tea, coffee, Sprite, Coke, each and everything was a part of the plan. अब हम खा रहे हैं आलू के पकौड़े और कटलेट with Sprite 1 2 3 4। मज़े से। If you are coming with your family, you can book the sofa side, which is slight expensive, and if you want to go with the VIP zone, then you can go with the VIP zone with the food down there only. That is of course a bit expensive. तो डेजर्ट सफारी कर अब हम वापस होटल रूम आ गए हैं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक, कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज मोर व्लॉग्स आर कमिंग सून। थैंक यू सो मच, एंजॉय।